कितने अवतार लिए भगवान ने। इतने अवतारों के बारे में तो सुना भी नहीं था हमने। कितने अवतार लिए कि किसी तरह से मनुष्य को अपने अस्तित्व की, अपने लक्ष्य की याद आ जाए। और ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ भूतकाल में हुआ, ये वर्तमान में भी हो रहा है। और आज से 4000 साल बाद शायद कोई और भागवतम एक और लिखी जाएगी जिनमें इन 4000 सालों का वर्णन होगा कि भगवान ने इन 4000 साल में और कितने अवतार लिए। तो ऐसा मत समझना कि ये हुआ, ये हो रहा है। जो हुआ वो हो रहा है। नहीं तो कथाओं को इतिहास और कथा समझ के हम आगे बढ़ जाते हैं। बट ऐसा जानना, सिर्फ नाम बदलेंगे नहीं भागवतम में, किससे नहीं बदलेंगे। नाम और परिस्थितियां बदली जाएंगी, सिर्फ मूल नहीं बदलेगा, शिक्षा नहीं बदलेगी। और उलझता है मन हमेशा नाम और परिस्थिति में। तो मान लो ये कि ये भागवतम, ये जो भगवान ने इतने रूप लिए, वो आज भी ले रहे हैं किसी तरह। बस ऐसा नहीं कि नारद उसी समय सिर्फ उन्हीं राजाओं को मिले। ये नारद भी बड़े अद्भुत हैं। ये तुम्हें पता नहीं किस किस और रूप में तुम्हारे पास आते होंगे, तुम्हारे बीच में आते होंगे। कभी किसी फॉर्म में जिसको तुम पहचान नहीं पाते, किसी उस फॉर्म में आके संदेश दे जाते होंगे। होता है अक्सर ऐसा। कभी कोई पान वाला तुम्हें संदेश दे देगा, कभी कोई रिक्शा वाला तुम्हें संदेश दे देगा। भीड़ भरी सड़कों पे कोई एक अनजान आदमी मिल के तुम्हें कोई संदेश दे जाएगा। वो सूत्र हैं सारे। मानना कि नारायण ही आ रहे हैं अलग अलग भेष बदल के। तो ये सतत चल रही है। भागवतम इज नॉट हिस्टोरिक, इट्स एवर प्रेजेंट। ये सतत चल रही है भागवतम। पढ़ बस इसलिए रहे हैं कि शायद पुराना दृश्य देख के आज का दृश्य देखने में हम निपुण हो जाएं। सिर्फ इसीलिए पुराना दृश्य देख रहे हैं। वो रेफरेंस काम आ जाता है ना। तो अगली बार कोई आके कुछ सूत्र दे तो समझना कोई तो नारद किसी नए रूप में आए हैं तुम्हारे सामने। तो नमस्कार कर देना जरूर उनको। कल हमने राजा ऋषभ की कहानी पढ़ी, जो जैनों के पहले 3 तीर्थंकर हुए, जो भगवान विष्णु का, नारद जो भगवान विष्णु के, नारायण के अवतार हैं। आज आगे शुरू करते हैं। चैप्टर 60, टाइटल भारत द हर्मिट। भारत, जिसको भारत नहीं भारता बोलते हैं यहाँ पे। भारता द सन ऑफ ऋषभ रूल्ड द किंगडम वेल. He was a righteous man and his rule was perfect. So famed was the earth under his rule that in later days she earned the name Bharatvarsha, since the good king Bharata ruled her. सोचो उस राजा ने कैसे रूल किया होगा कि उस ज्योग्राफिकल लोकेशन का नाम भारतवर्ष बन गया, जो आज तक चल रहा है। भारतवर्ष आज तक चल रहा है। ये उस राजा के धार्मिक रूल की याद दिलाता है। कैसा रूल किया होगा उन्होंने। In the wake of his ancestors, Bharata followed all the rules of conduct which are prescribed for a king, and the earth was happy under his rule. देखो,
सिर्फ प्रजा का खुश होना जरूरी नहीं है, पृथ्वी का भी खुश होना बड़ा जरूरी है। पृथ्वी रिसोर्स नहीं है सिर्फ, उस समय पृथ्वी वॉज एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मेंशन किया है, एंड द अर्थ वॉज हैप्पी अंडर हिज रूल। तो जिस जगह भी जाओ अपना घर बसाओ, अपना ठिकाना बसाओ, अपना आश्रम बसाओ, ये याद रखना, द अर्थ शुड ऑल्सो बी हैप्पी। और अर्थ से मतलब हुआ वह हर चीज जो उस पृथ्वी पे पनप रही है। वो वहाँ के फूल पत्ते पौधे पेड़ होंगे, वो वहाँ के जीव जंतु होंगे, वो सब अगर बहुत अच्छे से पनप रहे होंगे तो समझना पृथ्वी खुश है, बिकॉज इट्स अ लिविंग एंटिटी। ये गहराई है हमारे शास्त्रों में, ऐसे देखा जाता है हर चीज को यहाँ पे। He was a great devotee of Narayana. In the heart of Bharata was imprinted the form of the Lord. When he felt that he had enjoyed the kingdom and the pleasures it held long enough, Bharata divided the kingdom among his sons, crowned his eldest son as the king, and renouncing everything, he went away to Haridwar, to the ashram of the sage Pulaha. The ashram was located in a beautiful spot. It was surrounded by the river Chakra, which is even today full of shaligrams, the stones which are worshipped since the Lord Narayana is said to pervade them. तब से प्रथा चल रही है शालिग्राम की भी। Bharata stayed alone there, and with flowers and fruits collected by himself, he would worship Narayana every day with a full and overflowing heart, overflowing with bhakti. He had passed beyond the stage where the pleasures and the pains of the world affect man, and his heart was filled with peace, born of renunciation and detachment. His heart was filled with peace, born of renunciation and detachment. तो ये जो रिनंसिएशन, जिसको त्याग बोलते हैं, जो सुनने में लगता है बड़ा तकलीफ देह होगा, it is the source of peace, so it says in Bhagavatam. He had reached the very ecstasy of joy which comes of intense devotion to the Lord. तपस से नहीं आ रहा जॉय, एक एक शब्द पकड़ना। पीस आया है रिनंसिएशन और डिटैचमेंट से, बट जॉय आया है इंटेंस डिवोशन टू द लॉर्ड से। बारीक सा अंतर है, बट ध्यान रखना। और हमें दोनों चाहिए, शांति भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। तो शांति के लिए त्याग और वैराग जरूरी होगा, और आनंद के लिए भक्ति जरूरी होगी। अद्भुत सूत्र है इसमें। His heart would melt like water when he thought of Narayana, and tears of joy would often flow from his eyes. ये भक्ति का नियम। ईश्वर की याद आते ही, ईश्वर का नाम लेते ही, अपने गुरु अपने इष्ट का नाम सुनते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े होने चाहिए। कभी वो खड़े रोंगटे तुम्हारी आंखों में पानी बन के बहने भी लगेंगे, बट एक कुछ ऐसा होना चाहिए, एक तरंग सी, एक बिजली कुछ चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही तो समझना अभी महादेव बस नाम है तुम्हारे लिए, अभी नाम फॉर्म नहीं बना है। His heart was like a deep lake into which he had immersed himself and his ego and his self. Every day he would wander around clad in the skin of a deer, and with his hair matted and dusty, he would invoke the Lord who is present in the rising sun. I surrender myself to that glorious power which created this world, which pervades this universe and which it has created, which protects its beloved by the power of intelligence, which is the cause of the intellect functioning, which is lodged in the sun, thus giving its glory to the sun. उस ईश्वर को जो सूर्य को सूर्य का ताप दे रहा है, उस
ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं मैं। हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, अच्छी बात, भली बात, सुंदर बात है। बट ये भारत है, ये सूर्य देव को कौन ताप दे रहा है, कौन रोशनी दे रहा है, ये उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं। एक स्टेप और पीछे जाके वो भी देख रहे हैं कौन सूर्य में तप डाल रहा है, उसको मेरा प्रणाम, उस नारायण को मेरा प्रणाम। Days passed thus for him who knew no joy other than the thought of the Lord. Once when he was seated on the banks of Mahanadi, bent on his morning prayers, a piteous scene met his eyes. A deer had come to the banks of the river to drink water. All on a sudden, the roar of a lion was heard. The noise seemed to come from somewhere near. Frightened by the roar, which she knew was very near, the poor deer did not know which way to run. She had not even begun to drink the water for which she was thirsty. In despair, born of extreme terror, she tried to leap across the river. Because of her sudden panic, the little deer, which was unborn till then, fell into the river out of her body. The mother deer, when she reached the opposite bank, laying panting and crawled to a cave. After a few moments, she died. नदी पे जैसे ही जंप किया उस हिरनी ने, उसके पेट में बच्चा था, वो बच्चा पैदा हुआ नदी के अंदर, छोटा बच्चा, और माँ की मृत्यु हो गई। Bharata, who had been watching the entire incident, was overcome with pity for the poor, unfortunate deer, which had been born just a few moments back and which was struggling on the surface of the water. He gathered it up in his arms and took it to the hermitage. He fed it with milk and he fondled it and comforted it as a mother would. Days passed and the deer became older. By then it had become the very life of Bharata. He became greatly attached to this living thing. मैंने फोकस किया शब्द पे. He became greatly attached to this living thing. He who had renounced his kingdom, his wife and children and everything else, became inordinately fond of this animal. It became with him an obsession. He would not bear to let it out of his sight even for a moment. If it went out to gaze, he would become worried and tell himself, "My poor child has no friends, no kinsmen, no mother and no father. He has no one except me. I am his only refuge. He trusts me completely. I cannot fail him since he has implicit faith in me. It is up to me to protect him." शब्द देख रहे हो ध्यान से. It is up to me to protect him. He is nobody else than me. कहाँ गए नारायण? कहाँ से आई ये दोष दृष्टि? अटैचमेंट. उस मोह ने इस दोष दृष्टि को जन्म दे दिया. He would spend all his time with him. He would wander in the forest along with the deer, and he would carry him on his shoulders when he thought that the young animal was tired. And if he did not come back to him when evening drew near, he would be terrified and he would say to himself, "Will I see my beloved deer again? Perhaps a wolf or a wild hog or some other wild animal has eaten him up. The sun is about to set and still my child has not come back. Perhaps a lion has eaten it up. Perhaps a tiger is even now pursuing it." He would walk about in agony and say, "It is dangerous to leave it alone in the forest. I must go in search of it." सूत्र देखो एक और है यहाँ पे. उसको ख्याल आ रहे हैं कि ये डियर, ये बच्चा कहीं फंस गया है, कोई खा ना जाए उसको, कोई अटैक कर रहा होगा. नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. जब भी किसी से तुम प्रेम करते हो और उसके बारे में जब वो तुम्हारे पास ना हो, अगर तुम्हें ऐसे विचार आए कि उसका क्या हो रहा होगा, किसी संकट में तो नहीं होगा वो, मान लेना, जान लेना ये तुम्हारी केयर नहीं है, ये तुम्हारा कंपैशन नहीं है, ये तुम्हारा मोह है. क्योंकि केयर और कंपैशन में नेगेटिव विचार नहीं आएगा.
इस तरह के नेगेटिव थॉट मोह में आते हैं। ये सूत्र ये इसलिए बोल रहा हूं कि अपने भीतर टटोलते रहना है। जब भी तुम्हारा कोई प्रियजन तुमसे दूर जाता है, फिजिकली दूर जाता है, और अगर ऐसे विचार आए नेगेटिविटी के कि उसको कुछ हो तो नहीं रहा, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं पड़ी, ये करुणा नहीं, ये मोह है। करुणा में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। So saying, he would wander into the forest and like one demented, call out to the deer in affectionate terms, and when he found it, would bring it home in his arms. आज पक्षी बड़ा खुश है। फूल खिले इस पेड़ पे पीले, बहुत सुंदर। तो शाम का समय पक्षी एंजॉय कर रहे हैं फूलों में। अरे चुप हो गए, उनको मालूम चल गया भागवतम की कथा हो रही है और उनकी बात हो रही है। शांत हो गए एकदम। कॉन्शियस हो गए या सेंसिटिव हो गए? शब्द योगी, शब्द पकड़ो, शब्द में ऊर्जा है। कॉन्शियस होना भयभीत हो जाना होता है ना, जिस सेंस में आप बोल रहे हो। सेंसिटिव हो जाना मतलब आहा कुछ हो रहा है वहाँ जहाँ मेरी आवाज़ इंटरफेयर ना कर रही हो, मैं चुप हो जाता हूँ। ऊर्जा अलग हो गई दोनों शब्दों की। This affection for the deer made him forget his other duties, his daily worship of the Lord, his samadhi, when he would sit and concentrate on the form of the Lord, were all now things of the past. When he tried to worship, the deer would come in and prod him gently with his horns, and Bharata would offer to the deer all the young blades of grass which he had gathered. When he sat in meditation, the form of the Lord would not come before his mind. The antics of the young deer would come before his eyes, and he would smile indulgently at the thoughts of his pet. In short, everything was now forgotten, and the deer was the only thing that mattered. He would fondle it like a mother, and he would spend hours together talking to it. This was indeed a terrible state of affairs for one who had renounced the world. सब छोड़ के तोते में जान फंस गई। सब छोड़ आए थे। Days passed by, and death, which is no respecter of persons, finally drew near Bharata with the speed of a storm and entered into him like a snake would into the hole where the rat lives. क्या एग्जाम्पल देते हैं। जिस बिल में चूहा रहता है, जिस तीव्रता से सांप उसमें घुसता है क्योंकि उसका भोजन है, इसी तीव्रता से मृत्यु शरीर में प्रवेश करती है, एज इफ उसका भोजन पड़ा वहां पे। Death is ever hungry, it seems. Bharata fixed his dying eyes on the deer, and his last thoughts was of the deer. Aching for his pet, Bharata gave up his breath. कहानी है ये, सुनी भी होगी शायद तुमने पहले कभी, बड़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ दिल लगा रहे हो, सब छोड़ के ध्यान रखना। कहाँ दिल लगा रहे हो, कुछ ना छोड़ के तो भी ध्यान रखना। बहुत बार बहुत चीजें छोड़ के किसी छोटे में फंस जाते हैं। हाथी तो निकल गया था भारत के लिए, पूंछ रह गई और भयंकर रह गई पूंछ। सब छोड़ा, पुत्र, बीवी, राजपाट, हिरन का एक बच्चा ने फंसा लिया। तो माया को प्रणाम करना, हमेशा प्रार्थना करना माया से कि जाने दो, शिव के पास जाने दो, तुम भी चलो। हे शक्ति, तुम शिव का ही स्वरूप हो, चलो साथ में चलते हैं। मेरा हाथ पकड़ के माँ मुझे ले चलो शिव तक, मुझे मिलवा दो शिव से माँ, क्योंकि तुम माया का भी रूप धारण कर लेती हो। बट बहुत बार माया को हम
ऐसा लगता है कि अरे सब तो छोड़ दिया, अब ये क्या फंसाएगा मुझे। वहीं दुर्घटना होती है। जहां तुम ज्यादा श्योर होते हो वहीं दुर्घटना होती है। याद रखना इस नियम को। जैसे ही कोई फास्ट बाइक राइडर या कार राइडर जिस पैच पे श्योर हो जाता है वहीं गिरता है वो वहां पे। ये मैंने बहुत बार अनुभव किया जीवन में। बहुत साल पहले गुड़गांव के एक स्ट्रेच पे जो बिल्कुल खाली था, कोई उम्मीद ही नहीं थी वहां किसी भी चीज के आने की, और उस स्ट्रेच पे मैं बहुत तेज मोटर बाइक चला रहा था। उससे पहले जहां ट्रैफिक था मैं बड़े आराम से चला रहा था, क्योंकि ट्रैफिक है, संभल के चलाना पड़ेगा। बट उस एक स्ट्रेच पे जहां कोई नहीं था, एकदम खाली जंगल जैसा था, वहां केयरलेस हो गया मैं। मुझे लगा ये स्ट्रेच तो खाली है, इस पे तो क्या ही हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस। और वहीं मैंने रिप करना शुरू किया, यानी थ्रॉटल खींचा वहीं पे, बाइक तेज हुई, और वहीं सडनली आउट ऑफ नोवेयर उन झाड़ियों के बीच में एक कट था, और उस कट से एक कार सीधा आ गई, एंड माई बाइक स्ट्रेट अवे क्रैश्ड इनटू दैट कार। फ्यू बोन्स गॉट ब्रोकन। ये कभी ऐसे स्ट्रेच पे नहीं हुआ जहां मैं संभल के चलाता हूं क्योंकि ट्रैफिक है, उस स्ट्रेच पे हुआ। आप वहीं गिरते हो जहां आप या तो केयरलेस हो जाते हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एक छोटा सा उदाहरण मोटर बाइक का दिया, प्रैक्टिकल लाइफ का दिया, ताकि पकड़ पाओ इस बात को। तो साधना के पथ पे स्कोप नहीं है, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होने का स्कोप है, ना ही केयरलेस हो जाने का स्कोप है। कहां से घुसेगा मोह कह नहीं सकते। देखो भारत के जीवन में कहां से घुसा, सोच सकता था कोई कि डियर के, मतलब क्या कहते हैं डियर को, हिरन के बच्चे से प्रेम और इतना मोह हो जाएगा। अद्भुत है। That's how chapter 60 ends. Chapter 61 title Bharata the Deer. पिछले चैप्टर का नाम था भारता द हर्मिट, अब भारता द डियर। लेट्स सी। Bharata was born again. Since his thoughts were fixed on the deer, since with his last breath he was calling out to the deer silently, he himself got born as a deer. But he was fortunate in one thing. He had the privilege of remembering his previous birth. Overcome with self-pity, he told himself, "What a pitiable state of mine is. I had abandoned all kinds of attachment. I had made the forest my home, and my mind was ever lost in thoughts of the Lord and in remembering the many stories of Narayana. There was place in my heart for Narayana and nothing else. My mind was firmly fixed on his lotus feet, and into that calm lake came a disturbing factor, the affection I developed for the deer." उसको डिस्टर्बिंग फैक्टर बोल रहे हैं। So powerful was it that it made me forget everything else, even my Lord Narayana. I forgot him also. I had strayed far from the path. As a result of that, I have been born as a deer instead of reaching the Brahmi state. Such is the power of affection and attachment to worldly things. शब्द पकड़ना। Such is the power of affection and attachment to the worldly things. जब तक ये अफेक्शन और अटैचमेंट नारायण के प्रति है तब तक कोई झंझट नहीं। जैसे संसार के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पे लगा, फंस गए। जब मैं ये बात बोल रहा हूं, इनमें से कुछ बातों पे एम्फसिस इसलिए करता हूं, पॉज इसलिए लेता हूं, साथ के साथ रिफ्लेक्ट करते जाना किन किन चीजों पे, किन किन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों पे तुम्हारा अफेक्शन और अटैचमेंट है।
उनसे तुम्हें मुक्त होने की आवश्यकता है। प्रेम नहीं बोला यहां, अफेक्शन और अटैचमेंट बोला, अंतर है। प्रेम को इंग्लिश में लव बोलते हैं, शब्द लव नहीं इस्तेमाल किया। I must try and exhaust this birth by associating myself with people whose thoughts dwell on Narayana only. My mind will once again become attuned to the higher sphere. By thinking on him, by listening to his praises, by listening to conversations and talks about his glory, I will be rid of this janma and I will become free of this earthly bondage. In the form of a deer, Bharata traveled towards a Shalagrama, which was a spot where rishis congregated. Staying there, living on the grass growing in the ashram, and drinking the waters of the river flowing there, Bharata spent his life painfully waiting for death, which would relieve him. Finally, he died and was granted freedom from the form of a deer, a mere animal. तो चुना एक ऐसे स्थान को जहां ऋषिज हों, कोई कथा, कोई बात, कोई सत्संग, कोई संगति की ऊर्जा, आवाज इसके कानों में पड़ती रहे, वहीं जिया बस ये। एक हिरन में इतनी समझ थी, हम में नहीं इतनी समझ। हमें शहर में जीना है, हमें व्यापार में जीना है। हम तो महीने में 2 दिन निकाल के भी उन संतों की जगह, उन आश्रमों में जाके नहीं जीते जहां ये कथा चल रही हो, जहां नारायण की, शिव की प्रेजेस हो रही हो, जहां ऐसी ऊर्जा हो। हम व्यस्त लोग हैं। ये हिरन हमसे ज्यादा समझदार है। सही बात है, हम व्यस्त नहीं, हम अस्त व्यस्त लोग हैं। दूसरी बात, यहाँ आश्रम में बहुत सारे कीट पतंगे, तितलियां, भंवरे, चिड़ियां, सांप, मंगूस, नेवले, जंगली मुर्गे, जंगली खरगोश, ये सब आते हैं यहाँ पे अपने अपने व्यवस्था के अनुसार। जानवर मत समझना उनको, कीट पतंगा की दृष्टि से मत देखना। पता नहीं कौन से भरत अपने कौन से कर्म काटने यहाँ शिव की महिमा सुनने, नारायण की महिमा सुनने इस ऊर्जा में रह रहे हैं। पता नहीं कौन पेड़ बन के आया हुआ है यहाँ पे, कौन घास बन के उग रहा है यहाँ पे, मालूम नहीं है। तो एक एक कदम फूक फूक के रखो। कुछ चींटियां तो आएंगी पैर के नीचे, हृदयपूर्वक रखना कि आ भी जाएं पांव के नीचे, पता तो नहीं चलेगा, बट मेरी प्रार्थना जुड़ी है उनके साथ, उनका भी स्वागत है। शिव पे सबका हक बराबर, सिर्फ मनुष्य का नहीं है। That's how chapter 61 ends. Chapter 62, titled Jada Bharata. There was Brahmin belonging to the Angirasa clan. He was a very good man. He had followed the rules of conduct set down for a Brahmin. He had 9 sons, and his first wife and his second wife bore him a son and a daughter. The son of the second wife was none other than Bharata, who had to be born again. Bharata had been the son of Rishabha, an incarnation of Lord Narayana, and so Narayana had himself taught his son all the dharma to be followed by a mumukshu, one who aches for freedom from bondage. Bharata had been initiated into the Atma Vidya, and he had almost achieved it. But then, because of the prarabdha karma, which he had to exhaust, he had to be born as a deer, and after that, one more janma was needed to grant him freedom. Relentless is fate, and the path to salvation is not easy. It has been said that yogis are born in the homes of good men, and Bharata was born in the home of a good Brahmin.
Because of the disgust he felt with himself as a result of his fall from the grace in his previous janma, Bharata did not want to form any new attachment with anyone. And in his family he was found to hold himself aloof from others. He was a difficult child as far as his father was concerned. The poor man tried his best to initiate his son into the mastery of Gayatri, the music mantra. And though he spent several months in his attempt, he was not able to get any response from his son. Bharata would deliberately mispronounce the words and recite them all out of tune. He refused to learn anything, and gradually he managed to produce the impression that he was a deaf mute. People called him a fool, an imbecile, but he was not in the least affected by what people said. He remembered his previous birth, and he was bent on only one thing now: freedom from this earthly bondage. And so, like rain falling on the back of a buffalo, the comments of the men of the world did not affect him in the least, nor did it affect his general behavior. वो भैंस के ऊपर बारिश जैसे गिर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोग क्या कह रहे हैं, उसके बिहेवियर में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। कितना अद्भुत है उसका वन पॉइंटेडनेस देखो। रास्ता जो भी अडॉप्ट किया इसने, बट ब्यूटी इज द वन पॉइंटेडनेस। किसी चीज को वो अफेक्ट नहीं होने दे रहा स्वयं को, जो भी मार्ग उसने चुना। His father was drowned in the performance of worldly duties and worldly affections, and he was very unhappy that he could not make a good Brahmin out of his son. In course of time he died. His wife left her son and daughter in care of her stepsons and their mother. She followed her husband on the funeral pyre. Once their father was dead, the brothers of Bharata felt that they did not have to do much for Bharata. They felt that they did not have any responsibility as far as Bharata was concerned. They lost no time in ill-treating their stepbrother. Bharata would never protest, and that made them happy. They would make him labor in the fields like any ordinary workman, and they insulted his birth as a Brahmin. But Bharata did not mind it at all. He would work till sunset and would be satisfied with whatever food the brothers gave him. Sometimes it would be old musty flour, and sometimes he would get only the husk from the grains. They all tasted the same to Bharata, and he spent his hours thinking on the Lord and doing menial work for his brothers. क्या रास्ता अपनाया, अद्भुत है ये भी। There was a robber chieftain who did not have any children. He was told that offering a human being as a sacrifice to the goddess Kali would get him a son. He therefore sent his servants in all directions to bring a human being fit enough for the sacrifice. They searched in vain all through the day, and they saw that night had set it. They were wandering around. Suddenly at a distance they saw a human being standing on mount, standing on a raised spot. Bharata was guarding the fields to prevent their being destroyed by deer and wild hogs during the night. The servants of the robber chieftain drew near and looked at Bharata. He had always been unmindful of the comforts of the body. Rain or shine, cold or heat were all the same to him. He had not even covered his body properly, as he was used to lying on the ground, and anywhere his body was covered with dust and grime. His hair was all dirty and matted. He was like a precious stone covered with clay. His sacred thread was black and dull. Life in the open and hardihood he had undergone all these years had made the body of Bharata strong and powerful. Looking at him, the servants of the robber king thought that he was a perfect victim. His body, though dirty, was
without a single blemish or wound or even a scratch. They lost no time in making up their minds. They tied him up with ropes and carried him away with them. They were rather surprised at his unresisting attitude when they tied him up. उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. They took him to the temple. He was bathed in holy water and he was dressed in the clothes meant for a sacrificial victim. They smeared sandal paste all over his body and his forehead bore the mark of the red sindura. They made him partake of a big meal and then placed him before the altar of the goddess. There was wild music and beating of drums. All the while, Bharata sat silent and unaffected. The priest then pronounced the incantations and lifted his sword to kill the Brahmin. The goddess, however, could not bear the glow emanating from the Brahmin sitting there ready to be killed. His Brahmic glory was burning her, and she came out, unable to bear it. She saw that a great crime was about to be committed. A poor, unresisting Brahmin was to be killed by a group of robbers, bloodthirsty villains, every one of them. And the crime was ascribed to her. She was followed by a group of servants from the heavens. She stood there watching while they fell on the miscreants, killed all of them and drank their fill of their blood. The goddess then disappeared after blessing the Brahmin and he too went on his way. अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको. काली भी आई, काली के अटेंडेंट भी आए, उन सभी रॉबर्स को मार के उनका खून पी गए. और भारत ये सब देख रहा है, स्टिल अनअफेक्टेड. काली भी चली गई अपने रास्ते और भारत उनकी ब्लेसिंग लेके अपने रास्ते. That's how chapter 62 ends. Chapter 63, titled Bharata, the palanquin bearer. Palanquin होता कंधे पे लेके चलते हैं जिसमें लोग बैठते हैं. Once a king by name Rahugana was traveling along the banks of the river Ikshumati. He was lord of the countries Sindhu and Sovira. He was being carried in a palanquin, and the bearers thought that one man more would make it easier for them to carry the weight. They looked around and their eyes fell on Bharata, who was standing there. He was well built. He looked strong and tough, and they felt that he was ideal for the job. Accordingly, they called out to him and ordered him to help them. Bharata, who presented the appearance of a stupid person, did not speak a word. Though it was degrading for a Brahmin to carry the palanquin of a Kshatriya, but Bharata did not protest. He lifted it silently along with the others. On the way, at every step, he would scrutinize to see if there was any helpless germs, insect or worms. पाँव देख देख के चल रहा है, कोई उसके पाँव के नीचे तो नहीं आ जाए. Making sure that there were none, he would then place his foot on the spot. Naturally, this upset the rhythm of the pace of the others, and most of the time the palanquin would lopside it. सब तो तेज चल रहे हैं, ये धीरे धीरे विपश्यना वॉक करते हुए देख के चल रहा है कि किसी जीव पे पाँव ना आ जाए, किसी जंतु पे पाँव ना आ जाए. The king became quite annoyed about it and said, "Why is the palanquin leaning on one side like this? Can you not do your job in the proper manner?" The servant said, "It is not our fault, my lord. This newcomer is not falling in steps with us, and hence the inconvenience to you." The king looked at the newcomer, and he looked him up and down. In a sarcastic voice he said, "Poor man, you look pitiable. You have been carrying the burden all by yourself all this distance. You are very tired and your form is so thin and in fact emaciated. Your muscles are flabby and you are not tough like the others. My friend, you are also too old to work." Bharata was silent. He again did not speak a word in retort, but silently
He lifted up the plankion to his shoulder. They began to move. A few steps has been taken, a few feet of ground had been covered, and again the same thing happened. This time the king was openly angry. He said, "You fool, what do you think you are doing? You are behaving like a walking corpse. You disregard my command and you are behaving impertinently. I will teach you a lesson, and I will do it so thoroughly that you will get some sense into your head. I must punish your arrogance." The king was proud of the fact that he was a king, the master who could do what he liked with his servants. In him the two gunas, tamas and rajas, were predominant, and so his pride, his arrogance had grown beyond all control. Tamas rajas का कॉम्बिनेशन था ये राजा, जिससे प्राइड और एरोगेंस का जन्म हो जाता है. He thought that he was a great man and that every other man was inferior to him. He had not benefited by the company of good and God-loving people who could have, if they had been given a chance, instilled in him some wisdom. फिर देखो, company of good man. ज्ञान तो वहीं से आएगा, साधु संग से. This foolish king spoke cruel and arrogant words to the Brahmin, who would not hurt anyone or anything, not even a worm crawling on the ground. Bharata looked long and silent at the king. A slight smile was seen at the corner of his mouth. Without raising his voice, without any rancor, he said, You're angry with me because you think that I'm not carrying your plankium properly. You spoke with sarcasm when you said that I have been carrying the burden too long and that I'm tired. Your meaning is that I am not one bit tired by this burden. In a way, your words are true. But your desire to hurt me with your sarcasm is, I'm afraid, pointless. It does not hurt me. Shall I tell you why? You are under the impression that this body of mine is real, and the burden it had been carrying all the while is also real. If this is true, then your words should certainly have hurt me. But then, how can you be sure that these two are real? I cannot prove that this body of mine is real, nor can I prove that the burden it has been carrying is also real. Under the circumstances, how can it be possible to hurt a person or a thing which is non-existent? Vedanta. I am not this body. ये शरीर में नहीं हूं. ये वजन जो तुम्हें दिख रहा है, ये शरीर कैरी कर रहा है, मैं वो नहीं हूं. और क्योंकि मैं ये नहीं हूं, इसलिए जो तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो मुझ तक आ भी नहीं रहा, क्योंकि मैं वो हूं नहीं. The real I in me has absolutely no connection with this so-called body of mine. And insults to this body or injustice heaped upon this body do not affect me in the least. You said that I have been carrying the burden alone for a long distance and that I am tired. You meant to insult me, I know, but I do not choose to be insulted. The reason is this: if it is true there is a distance to be covered, if there is a purpose to be achieved by covering that distance, and if these two factors have anything to do with me, then and only then should I be affected by your remarks. क्या बात है? अगर ये सत्य है कि कोई रास्ता कवर करना है, अगर ये सत्य है कि वो रास्ता कवर करने के लिए एक पर्पस है, एक पर्पस अचीव हो जाएगा वो रास्ता कवर करने से, और अगर ये दोनों पर्पसेस हैं तो ही तुम्हारी बात मुझे दुख पहुंचा पाएगी, अदरवाइज नहीं. ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है. यानी जो ये मैं कर रहा हूं, मेरा कर्म, और जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस कर्म को करने का एक फल मिलेगा, पर्पस, अगर वो कर्म सत्य मान रहा हूं, उस कर्म के फल को सत्य मान रहा हूं, तो हर्ट होऊंगा.
और देखें गहरे, अगर कर्ता मैं हूं और अगर कर्म फल में मेरी अभीप्सा है तो मुझे दुख होगा। अद्भुत बात कह रहे हैं। ना तो कर्ता भाव मेरे में, ना कर्म फल की अभीप्सा मेरे में। I have no purpose in covering that distance, but I am doing it because it's the situation. मैं खड़ा था, इन्होंने बोला ये कंधे पे डाल लो, मैंने डाल लिया, तुमने कहा चलो, मैं चल पड़ा। इसमें मेरा क्या? इसमें मैं कौन? इसमें कर्ता कहां? इसमें कर्म फल कहां? तो इसमें दुख कहां? यानी जो परिस्थिति अपने आप को प्रकट कर रही है, उस परिस्थिति में मुझे जो करने की आवश्यकता पड़ रही है, मैं वो कर रहा हूं। आई एम जस्ट डूइंग व्हाट इज ऑट टू बी डन इन दैट सिचुएशन, पीरियड। अद्भुत बात है। बट देन आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ईदर ऑफ दीज थिंग्स और माई कनेक्शन विद देम। ये रास्ता, इसको कवर करने का पर्पस, मैं क्या कनेक्शन इसमें? I have no connection with all of that. And so I am not affected by your words. You said that I am not big, but emaciated. The words are meaningless considering that I am formless. And the qualification big and small, lean and fat do not apply to it. जब फॉर्म ही नहीं हूं मैं, तो ये एडजेक्टिव्स किसको दे रहे हो तुम? These words are for describing the body, the home of the Atman, and not the Atman itself. ये सारे एडजेक्टिव्स उस घर के हैं जिसके अंदर आत्मा रह रही है, आत्मा के नहीं है एडजेक्टिव। तुम घर की बात कर रहे हो, मैं घर नहीं हूं। I live in the house, but I'm not the house. मैं घर में हूं ऐसे ही बोलते हो जब तुम घर में बोलते हो, ऐसा तो नहीं बोलते हेलो मैं घर हूं, ऐसा नहीं बोलते। मैं घर में हूं बोलते हो। तो तुम अलग, घर अलग, वही संज्ञा शरीर की भी हो रही है यहां पे। फैटनेस और लीननेस, डिसीज ऑफ द माइंड एंड द बॉडी, हंगर, थर्स्ट, फियर, quarrelsomeness, desire, old age, sleep, lust, avarice, pain, all these affect one who thinks that he has a body and not me, who knows the truth about myself. This body is short-lived, limited, while I am endless, eternal. You call me a walking corpse. So are you. And so is every man and animal on this earth. O King, the process of birth and death do not confine themselves to me alone. All things which are undergoing change are liable to birth and death. Every moment there is birth and there is death. If by any chance wealth and the owning of wealth are permanent, then this command of yours and this threat of yours that you will punish me will be plausible. क्या बात कर, जो बुद्ध का, जिस बुद्ध के सूत्र पे पूरा धर्म बुद्ध का टिका है, उस सूत्र की बात कही जा रही है यहां पे। वह सूत्र है, व्हाट इज द वर्ड इंग्लिश? इम्पर्मानेंट, इम्पर्मानेंस। इम्पर्मानेंस की बात कही जा रही है यहां पे कि यहां कुछ भी नहीं है जो स्थिर है। हर चीज परिवर्तनशील है और जो भी चीज परिवर्तनशील है वो मरेगी। जो उपजे सो बिनच है, जो पैदा हुआ वह परिवर्तनशील है, उसका अंत होगा। Impermanence, everything is impermanent here. But it is not so. The difference between a king and a servant arises because of the sense of duality, and I cannot find any other reason for it. There is no such thing as a superior person, and there is no one inferior to him. But you do not seem to realize it. Tell me what I should do now. I have realized myself. I do appear to be a stupid man.
a deaf man without any feelings, a fool. But really, the things of the world do not affect me, nor in the least. How then is your punishment going to affect me, since I know that I am far away from all this? It will be like kneading flour which has already been kneaded. It will have no effect on my behavior. Bharata took the plankium and tried to place it once again on his shoulder. सारा ज्ञान दे दिया उस क्षण में उस राजा को, और फिर जब अपनी बात खत्म हुई फिर उसको कंधे पे उठा के चल पड़े आगे। कमाल है। The unaffectedness and the unattachment of Bharata. ना किसी चीज का इफेक्ट हो रहा है, ना ही किसी चीज से अटैच है। ये ज्ञान जो भारत ने अभी इस राजा को दिया है, हाईएस्ट ब्रह्म विद्या, एपिटम ऑफ वेदांता, ये जान चुके हैं भारत, बट फिर भी ये जन्म लेना पड़ा है उनको, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रह गए थे, कुछ कर्म रह गए थे, प्रारब्ध रह गया था कुछ। उस प्रारब्ध को जड़ से खत्म करने के लिए जड़ रूप में भारत ने जन्म लिया। जड़ रूप मतलब जड़ ही होके जी रहे हैं, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रारब्ध को जड़ से खत्म करना ही होगा। इसीलिए बहुत बार प्रश्न उठता है कि रामकृष्ण को कैंसर क्यों हो गया, रमना महर्षि को कैंसर की तकलीफ क्यों भोगनी पड़ी। वो तकलीफ वो भोग नहीं रहे थे, क्योंकि वो इसी अवस्था में थे जिस अवस्था में भारत है, नॉन अटैच्ड, रियलाइजिंग दैट दे आर नॉट द बॉडी, दे आर नॉट द माइंड, दे आर नॉट दिस हाउस, दे आर लिविंग इन द हाउस। कुछ प्रारब्ध हैं जो उनको काटने हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म लिया है, तो अपना प्रारब्ध काट रहे हैं बिना किसी चीज से इफेक्ट हुए। सूत्र गहरा है, कोशिश की जा सकती है, हम भी अपने प्रारब्ध को काटें इसी तरह से। सुख आए तो सुख, दुख आए तो दुख, दोनों परिस्थितियों में ना सुख को सुख की तरह देख रहे हैं, ना दुख को दुख की तरह देख रहे हैं। ये यात्रा जीवन की, और भक्ति भाव में रहते हुए ये करना आसान हो जाता है, सिर्फ इस बात को समझ के करना मुश्किल हो जाता है। That's the essence of Bhagavatam. That's how chapter 63 ends. आज यहीं बंद करते हैं।